corner has been averted. Can Union Bank score from this? They haven't converted the earlier penalty corner, so this is another chance as Desh Puvaya is strolling towards the spot. He will be the injector. Darshil is standing there on the edge of the circle. We have to wait and see how they will take this hit from the circle. And they've taken a drag flick. That was very well defended, though. Danger still not averted. Desperate defending. And finally, danger has been averted and a free hit has been awarded to Sale. So this penalty corner ultimately yielding nothing for Union Bank. The score still reads Sale 3, Union Bank 1. सोलह गज के हिट अपने लेफ्ट फुल बैक जमीर मोहम्मद का स्कूप वहाँ पे बाहर जाता हुआ स्कूप कोशिश ज़रूर की थी पहुँचने की राहुल शिंदे ने सफल नहीं हो पाए इस तरह से जो एक वेंकटेश को मौका बन सकता था वो यहाँ पे जाता हुआ खींचने की कोशिश वहाँ पर राहुल की इन्फ्रिंजमेंट राहुल को जिस तरह से वहाँ पर रोका गया एक बार फिर स्कोप वहाँ पर राइट विंग में अच्छा ट्रैप अच्छी ड्रिबलिंग वहाँ पर डी के बाहर निकलने की कोई जगह नहीं दे रहे हैं तेजास एक स्कूप को जिस तरह से ट्रैप किया सही वहाँ पर प्रदर्शन किया था आक्रमण बनाने की कोशिश ज़रूर की थी सेल ने दाएं तरफ स्कूप द्वारा वहाँ पर गोविंद नाग को गेंद बढ़ाई थी गोविंद नाग जो कि इंडिया जूनियर कैंप में रह चुके हैं और ये वहाँ पर यूनियन बैंक एक बार फिर दाएं छोर से वहाँ पर वेंकटेश जिन्होंने एकमात्र गोल किया वेंकटेश वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन जो माइनस की थी गेंद उसे संभाल ली वहाँ पर रंजन पालेक का फॉरवर्ड पास रंजन पालेक का अनमोल एक्का को अनमोल जिन्होंने 3-1 किया था सेल के पक्ष में फ्री हिट ये बाहर जाता हुआ हिट इन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कुछ करना होगा यूनियन बैंक को क्योंकि 2-1 से पीछे उनकी टीम मौका नहीं दिया वहाँ पर गेंद सही तरीके से संभालने में सफल हुए इस बार लिविन यूनियन बैंक के लिविन से वेंकटेश क्या वेंकटेश पक्की गज की रेखा को पार करते हुए उनका पीछा करते हुए वहाँ पर समीर और आलोक अभी वेंकटेश वहाँ पर गेंद संभाले हुए लेकिन एक इन्फ्रिंजमेंट कॉर्नर के बाद वहाँ पर डी के अंदर गेंद बढ़ा दी थी गोविंद नाग ने बराबर आक्रमण करती हुई यूनियन बैंक की टीम जमीर आगे बढ़ा है जमीर ने वहाँ पर दर्शिल को गेंद दी फॉरवर्ड पास वहाँ पर 16 गज के हिट सेल के लिए जबरदस्त आक्रमण बनाया था वहाँ पर वेंकटेश ने उन्हें मालूम है 2 गोल का अंतर कम करना होगा यूनियन बैंक को अगर उन्हें इस पूल में जिंदा रहना है क्योंकि ये उनका पहला गेम है और सेल की टीम अपना पहला मैच 17-0 से जीता था सेल ने नेल्को को हराया था दिनेश ने 5 गोल किए थे तो सेल अगर ये मैच जीत जाता है तो सीधे फाइनल में चला जाएगा एफसीआई को इसके बाद मैच खेलना है कनारा बैंक से पूल बी का वो मैच है अगर एफसीआई की टीम जीतती है तो एफसीआई भी फाइनल में चली जाएगी तो सेल और एफसीआई के बीच नीलाद्री
लगता है कि फाइनल चांसेस हैं कि यही दो टीमें बहुत ही मजबूत टीमें हैं। अभी तक जो खेला हुआ है ऐसा ही तो लग रहा है, but we never know. We have to wait because there can be so many things happening in hockey. Miracles do happen. At the moment, there has been another penalty corner awarded to Union Bank. The Union Bank players are in the huddle. They need to convert the penalty corner if they want to stay in this match. They only have about 7 minutes left in this match. As Darshil is hurrying towards that point from where he will be injecting. Babu Metkar seems to be ready to take that shot. And Metkar takes, and that's a goal. That was a drag flick from Metkar. And he had the purpose in his mind. What a good conversion that was. So we have a match in our hands once again. It's 3-2 at the moment. So what a good comeback. Look at that. And that was Babu Metkar who drag flicked and found the goal. It's 3-2 at the moment. And we are in the last quarter. Anything can happen. Union Bank can at least get 1 point from this match. And that will be an achievement of sorts for them. Because they will be playing Nalco after that. The way Nalco played, well, surely Union Bank will start it as favourites. So they need to get into the at least the third, fourth match in a match. If they come, if they qualify from this group as the second team, it'll be very difficult for them to go past Sale. If not, they can score 2 goals from here. That was Venkatesh, Levine, a check from the stick, and that will be another penalty corner, it seems. Another penalty corner, and now Union Bank are on song at the moment against Sale. Can they score another one? Can they draw parity in the match? It's 3-2 against Union Bank. Sale have scored 3. Union Bank at the moment are on fire. This is another penalty corner. And another attempt, and another penalty corner. That was carried. So another penalty corner. And the Union Bank players are appealing for a penalty stroke because they feel that the ball was going towards the goal. Anyway, they will get another penalty corner. Back-to-back penalty corners now. Another penalty corner. Will that be another drag flick? Yes, and that's a goal. It's all square here at the Sai complex at the Salt Lake City in Kolkata. What a match. It's 3-3 at the moment. Union Bank have scored the third goal. And look at that once again. That's a drag flick there. And once again, it's the same man, that is Babu Metkar, who scored his second goal. So it's all square here. It's 3-3 here
at the Sai complex. Can Sale get another one and seal the match for them? It's a real contest today, and that will be a foul and a free hit for Union Bank. So a couple of minutes left before the final hooter. And Sale will try to get as many as 3 points and seal their position in the final. तीन तीन की बराबरी पर सेल और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब बाबू यहाँ पर सही में बाबू नज़र आ रहे हैं। 2 गोल किए बाबू ने 15 नंबर की जर्सी में पेनल्टी कॉर्नर से। इस समय आक्रमण पर लिविन, एक बार फिर वहाँ पर गेंद संभाल लिए दर्शविल, अंदर के गेंद वहाँ पर, क्या वो मौका मिलेगा सचिन को? 16 गज की हिट सेल के लिए। तो अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कौन टीम फाइनल में जाएगी। सेल ने 17 गोल किए थे। यूनियन बैंक को एक मैच और खेलना है, वो नेल्को से खेलेगी। क्या अगर यही रिजल्ट रहता है तो क्या यूनियन बैंक नेल्को को 18 गोल दे पाएगी? 4 पॉइंट पर है अभी सेल की टीम और यूनियन बैंक के 1 पॉइंट है, जो कि रिजल्ट दिखा रहा है 3-3 नीलाद्री। Yes, if they split points today, then that will be an advantage for Union Bank, because they will be up against Nalco and they will know exactly how much they need to score to get into the final. But if they win, then definitely that will be a huge advantage for Union Bank. सेल थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ गई थी, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा यहाँ पर इस ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर हॉकी टूर्नामेंट में। और अंतिम मिनट का यहाँ पर खेल बाकी और ये पेनल्टी कॉर्नर, क्या इसका कोई लाभ उठा पाएंगे सेल के खिलाड़ी? हाथ फौलाद हमारे, जो कि कोल इंडिया का एंथम है, फौलादी टीम यहाँ पे खेल रही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम, और पुश करने जा रहे हैं सेल की ओर से। 26 नंबर की जर्सी, हाँ पुश करेंगे, शायद हिट लगाएंगे। नेविल कुल्लू तैयार है, नेविल भी तैयार हैं और रंजन पॉल का भी। देखें कौन हिट लगाता है, गेंद कौन रोकते हैं। नेविल ने वो किया, वो रिवर्स लेने की कोशिश की थी वहाँ पर। शुलेबा लिशम ने पलटा आक्रमण यूनियन बैंक का, इंफ्रिजमेंट, फ्री हिट मिलेगी यूनियन बैंक को। अंतिम समय वहाँ पर लंबा स्कूप, लेकिन डेंजरस प्ले। पलटा आक्रमण सेल द्वारा, सही समय पे गेंद संभालते हुए वहां पर जूलियन। 3-3 की बराबरी पर इस पूल ए के मैच में, जो कि साई एस्ट्रोटर्फ पे खेला जा रहा है इस समय। वहां पर गेंद लेते हुए देश, और डी के बाहर अंदर आते हुए वहां पर हिट लगाई थी वेंकटेश केंटे ने। कॉर्नर, राहुल शिंदे कप्तान अंदर की तरफ गेंद बढ़ाना चाह रहे थे। वृषभ सफल नहीं हो पाए, हिट इन। एक बार फिर वृषभ, अच्छा इंटरसेप्शन, और सही समय पे वहां पर पहुंचकर आलोक कंडुलना ने गेंद संभाल ली। पलटा आक्रमण 3-3 की बराबरी पर। सेल को इंतजार करना पड़ेगा फाइनल में जाने का, क्योंकि अभी उनकी टीम सिर्फ 3-3 की बराबरी पे है। पहला मैच जीता था 17-0 से। इस समय दाएं छोर से आक्रमण बनाने की कोशिश करती हुई सेल की टीम, गेंद बढ़ाई थी वहां पर अंकित ने। सेल की ओर से आनंद, अनमोल और मिंज ने गोल किए।
जबकि यूनियन बैंक के 2 गोल बाबू की और 1 वेंकटेश का। सेल एक बार फिर वहां पर गेंद संभाली थी दिनेश ने, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक पलटा आक्रमण वहां पर 25 गज की रेखा क्रॉस करते हुए डी के बाहर थे। फ्री हिट मिलेगी सेल को। तेज खेल होता हुआ इस अंतिम क्वार्टर में। डुलियन डी के बाहर गेंद संभाली थी वहां पर अनमोल एक्का ने। अच्छी ड्रिबलिंग। अंतिम समय इस अंतिम क्वार्टर का। क्या करते हैं, वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे समीर एक्का के पास अभी भी गेंद, लेकिन गेंद छीनने में सफल हुए वहां पर राहुल शिंदे। फ्री हिट यूनियन बैंक को। लिविन से कार्तिक, वहां से गेंद क्या क्रॉस कर पाएंगे। एक बैक पास देने में सफल हुए। एक बार फिर रिटर्न पास लिया, इंफ्रिजमेंट हुआ वहां पे, स्टिक इंफ्रिजमेंट। फ्री हिट सेल के लिए। सेल का ये दूसरा गेम और फाइनल हुटर इस तरह से 3-3 की बराबरी पर। सेल 3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3। सेल का अंतिम ये लीग मैच था। सेल के 4 पॉइंट हुए 2 मैचों में। Yes, and this score has made this pool very lively because Union Bank will play Nalcos. They have 1 point to their credit. Sale have finished the group stage with 4 points, and they have to wait for the result of the match between Union Bank and Nalco. If Union Bank can pump in more than 18 goals against Nalco, then they will be through to the finals. Otherwise, it will be Sale who will be sailing to the final match that will be held on the 20th in this very ground. So with the news that the match has ended in a 3-all draw, we'll take a break and come back with the next match. So till then, stay tuned and enjoy watching All India Public Sector Hockey Tournament 2025.
Mulchandra Singh, Public Relation Officer, CIL, Mr. Anupam Rana, Senior Sports Journalist, and the Vice President of Asian Sports Journalists Federation, Mr. Sava Nayakan. So I request all the members to please kindly move towards the FOP. We'll be shaking hands with the team players and we'll be having a picture-perfect moment on the second day, second match, going to take place right now. It's FCI and Canara Bank. Welcome back to the Sai complex in Salt Lake City, Kolkata, for match number 4 of All India Public Sector Hockey Tournament 2025. Well, I request all the dignitaries to kindly stay back here for the photo moment. I request both the teams, the players, the two matches up against each other are so that we can have a picture-perfect FCI moment Food with all the Corporation of India members, and Canara Bank. all the players, FCI umpires, and obviously with all are the playing their dignitaries second present here and the this last lovely of the group league morning. matches, and Canara Bank will be starting their journey today against FCI, the team which scored a bizarre number of goals yesterday against host team Coal India Limited. And they scored as many as 34 goals, and so they are Start with the match. It's FCI very versus confident Canara before Bank, where FCI, taking they have on scored a wonderful Canara lead. Bank. They have scored It's a new yesterday match, a with new 17 day, goals. No, sorry, and it's, a new opponent. 34 goals. But Canara Bank will definitely have in their mind that they are playing against a team which had made a dream start yesterday. And these are the dignitaries who are getting out of the pitch after being introduced to the players. So the match has begun with FCI playing in their customary white jersey, playing from the right to the left of your screen, and they are up against Canara Bank, who are playing with red and white and a bit of blue as well. A colourful jersey for the Canara Bank player, and we have to wait and see whether they can make it colourful for themselves as well on the pitch. Bipin Bopaya for Canara Bank. Attack from the left flank. And that is Pradhan Somanna still holding on. This is Chetan Malappa now. And is challenged by as many as 2 players. He gets a hit in. He passes it back. So Canara Bank. And this is Somaya. Well, we did have a Somaya playing for the Indian team in the late 80s and 90s. Also the captain of the Indian team as well. Somaya. This is Ratan Matunna. So in the first couple of minutes, it has been all Canara Bank. Meanwhile, attack, and that was Likit with the first opportunity.
getting inside the striking circle, but not able to convert. We have seen an early goal in the last match, early this morning today, scored by Sale. Anand scored on the 3rd minute of the match. Eventually, that match ended in a 3-all draw. Sale versus Union Bank. At the moment, another bank, Canara Bank, is up against FCI. Well, Zafar Ali Khan, well, hopefully we'll be witnessing another keen contest in the second match of day 2. और पहले मैच में 34 गोल किए थे एफसीआई ने कोल इंडिया के विरुद्ध, जिसमें 10 गोल किए थे अंकुश ने। और इस समय ये फ्री हिट, वहाँ पे फ्री हिट लेते हुए दीपू सिंह। दीपू ने 2 गोल किए थे कोल इंडिया के विरुद्ध। बाईं तरफ जगह बनाते हुए वहाँ पर महिपाल 25 गज की रेखा को क्रॉस करके वहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड पास दिया। रिटर्न पास लेना चाह रहे थे, लेकिन कैरोबियन लकड़ा वहाँ पे मौजूद थे। कॉर्नर मिलेगा। कॉर्नर लेते हुए नितिन डी के अंदर पैट किया गोलकीपर जगदीप दयाल ने कनारा बैंक के। गेंद संभालते हुए वहाँ पर कनारा बैंक के खिलाड़ी। पहला गेम कनारा बैंक का। इसके बाद कनारा बैंक को एक मैच और खेलना है। वो मैच होगा कोल इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध। फ्री हिट एफसीआई के लिए स्कूप द्वारा गेंद दाएं तरफ, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन वहाँ पर इंफ्रिजमेंट हुआ था। इस तरह से ये फ्री हिट कनारा बैंक के लिए। नीले और लाल रंग की जर्सी में कनारा के खिलाड़ी। बैंक को अपना वॉल्ट जो है, डिफेंसिव वॉल्ट, वो मजबूत रखना होगा। एक बार जरूर दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, लॉकेट तोड़ने की कोशिश की थी। दीपू सिंह इस समय वहाँ पर ट्रैप में कहीं ना कहीं कमी जरूर थी सुरेंद्र कुमार की। डी के अंदर मौजूद थे 2 खिलाड़ी, वहाँ पे मौजूद थे, अंकुश भी वहाँ पे मौजूद थे। और ये पेनल्टी कॉर्नर। आज के अंपायर हैं इमरान खान और आदेश वाल्मीकि। ये पहला पेनल्टी कॉर्नर। देखें कौन हिट लगाते हैं। वहाँ पे मौजूद हैं कैरोबियन लकड़ा भी। पेनल्टी कॉर्नर से 5 गोल किए हैं एफसीआई ने कोल इंडिया के विरुद्ध। ये पहला मौका। 34 गोल किए थे पहले मैच में। पुश किया गया वहाँ पर, लेकिन सही से रोक नहीं पाए। वहाँ पर गेंद बढ़ा दी है बिपिन। और ये एक और पेनल्टी कॉर्नर कनारा बैंक के विरुद्ध। ये पहला क्वार्टर चलता हुआ। गजेंद्र सिंह जीत, गजेंद्र जिन्होंने 1 गोल किया था पेनल्टी कॉर्नर से। पुश करेंगे सफेद जर्सी में एफसीआई की टीम। पुश किया गया, ड्रैग किया वहां पर नितिन ने। 16 गज के हिट। यतीश कुमार, यतीश के पास अभी भी गेंद। अच्छा पास यतीश का। गेंद छीनने की कोशिश की थी वहां पर पृथ्वीराज ने। सेंटर लाइन क्रॉस करते हुए, आक्रमण करते हुए वहां पर बिपिन से बाएं तरफ आक्रमण बनाने की कोशिश एफसीआई की। डी के अंदर गेंद वहां पर पहुंच गए थे और रिवर्स फ्लिक द्वारा ये गोल हो सकता था, लेकिन अच्छा गोल लाइन सेव किया। अभिषेक वहां पे मौजूद थे। एक बार फिर ये कॉर्नर मिलेगा एफसीआई को। So it's an entertaining brand of hockey at the moment that we are witnessing on day 2. This is match number 2 on day 2, match number 4 of the tournament, All India Public Sector Hockey Tournament 2025. FCI are up against Canara Bank.
FCI did score as many as 34 goals in the last match, but they are up against a better opponent today in the form of Canara Bank. Karobin Lakra, who scored a couple of goals yesterday, finds Mahipal, who also scored a couple of goals yesterday. Most of the players did find themselves in the scorers' list yesterday against Coal India Limited. Meanwhile, attack now from Canara Bank, and that will be a foul on Yatish Kumar. He has been a live wire to the right for Canara Bank. Look at that once again. That was how it came about. A long ball for Yatish, and this is how he went on, tried to go past the defender. That was Mahipal, and that amounted to a penalty corner. The first penalty corner for Canara Bank, and they score from here. That was dangerous play inside the 23-meter line, and here comes the push, and a shot taken, and that will be another penalty corner. So pressure mounting on FCI at the moment with Canara Bank getting back-to-back penalty corners, and this will be KP Sumaya who will be taking the push, the injector. At the moment is KP Sumaya, and everyone's ready with the second penalty corner. In comes the push, and that's well saved there once again, and that gets in. So the first goal of the match scored by Canara Bank, and they've converted from a penalty corner. So the second penalty corner turning out to be fruitful for Canara Bank, and look at that once again. They got back-to-back penalty corners, and this was the second one, and in comes the scope, and that was a reverse from GN Prithviraj. So Prithviraj scores the first goal of the match. Jersey number 11, Prithviraj, has scored the first goal for Canara Bank. First goal of the match. Can FCI come back? And inside the Canara Bank D, that is well defended there by Likit. Ball comes to Chetan. That's a good-looking move inside the half, and they are appealing for another penalty corner, and they got another penalty corner as well. So it's a lovely phase of the match for Canara Bank. Lovely phase of the match, and FCI defense is all over the place at the moment. So they are defending, but not succeeding in keeping the forward line players of Canara Bank at bay. At the moment, it's 1-0 in favor of Canara Bank. Prithviraj scored the first goal from a penalty corner, and now they get another penalty corner. This is the third one. So we have to see whether they can double the lead. समया पुश करते हुए ये पेनल्टी कॉर्नर से पहला गोल किया था, सही तरीके से वहाँ गेंद नहीं रोक पाए और गेंद आ गई वहाँ पर विकास लकड़ा। समया का पुश अच्छा था। इस समय कनाडा बैंक आक्रमण डी के अंदर वहाँ पर रिवर्स वहाँ गेंद संभालते हुए रमनदीप, लेकिन सही इंटरसेप्शन। कनाडा बैंक ने दिखा दिया कि किस तरह से गोल किया जाता है एफसीआई के विरुद्ध। कल 34 गोल किए थे एफसीआई ने। बिपिन फॉरवर्ड पास, अच्छा इंटरसेप्शन, सही जगह पे पहुंचकर इंटरसेप्ट करते हैं। पृथ्वीराज जिन्होंने पहला गोल किया था पेनल्टी कॉर्नर से, ऊंची गेंद
बॉक्स के अंदर वहाँ पे पवन मौजूद है, पवन क्या ले पाएंगे इसे, बाउंस गेंद में संभाल ली पवन ने, डी के बाहर गए और ये फ्री हिट मिलेगी पवन को। कनारा बैंक के, उनकी टीम 1 गोल से आगे इस पूल बी का पहला मैच कनारा बैंक का, जबकि दूसरा मैच है एफसीआई का। एफसीआई ने पहले मैच में 34 गोल किए थे, जिसमें अंकुश ने 10 गोल किए थे कोल इंडिया के विरुद्ध। एक बार फिर वहाँ पर मौजूद हैं पवन, पवन पवन अच्छा कंट्रोल रखे हुए गेंद पर पवन और रतन मुथन्ना, दोनों के बीच एक अच्छी तालमेल। लेकिन इस समय गेंद संभालते हुए वहां पे बिपिन, स्क्वायर पास दिया, स्कूप करेंगे नहीं, ग्राउंडर पास दिया, कट ऑफ करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद संभाल ली वहां पे नितिन ने। नितिन से बिपिन, बिपिन ने गेंद दे दी आशिक, आशिक का फॉरवर्ड पास स्कूप द्वारा 25 गज की रेखा के पास, और ये पेनल्टी कॉर्नर, टाइम आउट लिया रेफरी ने, जिस तरह से वहाँ पे गलत तरीके से बाधा पहुंचाई गई थी। तो एक तेज आक्रमण वहाँ पर बनता हुआ एफसीआई का, शूटिंग सर्कल के बाहर जिस तरह से बाधा पहुंचाई गई थी। रेफ जो आज के अंपायर हैं इमरान खान और आदेश वाल्मीकि, उन्होंने देखा कि ये पेनल्टी कॉर्नर हो सकता है, गर्चे ये डी के बाहर था लेकिन एक अच्छा मौका था। Yeah, but that was within the 23-meter line, and the tackle was from behind, so a penalty corner has been awarded to FCI. गेंद पुश की जा रही है, गेंद सही तरीके से रोकी गया, ड्रैग किया गया। अंपायर से उलझते हुए यहाँ पे कनारा बैंक के खिलाड़ी आदेश वाल्मीकि और इमरान खान, 2 अंपायर। वाल्मीकि वहां पर, Canara Bank players are arguing that it was a hit on the stick, in fact, and we'll have a look at a replay how it came about. In comes the drag flick, and did that touch the stick? Yes, finally, a free hit has a 16-yard hit has been awarded to, or rather, that has been a penalty stroke. A penalty stroke has been awarded because the shot was goal bound, which is why a penalty stroke has been awarded. So that will be Parikshit who will be taking the penalty stroke. No, the keeper is not ready. So there is a bit of an argument with umpire. That will not help the cause of the player though. So that was carried and the ball was heading towards the goal. So a penalty stroke has been awarded. So a golden opportunity for FCI to get back parity in this match. And there's still an altercation. This is not the right approach by the keeper. He has to cool down. Canara Bank keeper. And this is Jagdeep Dawal. He's still not a happy man over here. And the game is halted. And FCI thought it was a goal awarded, but it has to be retaken. And it will be Parikshit who will be taking the penalty stroke. He has scored 4 goals yesterday. And it has been saved. So FCI have missed a penalty stroke. परीक्षित ने पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया। पहला आप देख सकते हैं रिप्ले में, परीक्षित वहां पर और उनके सामने है गोलकीपर जगदीप। परीक्षित ने दाईं तरफ गेंद मारी थी, जिसे दाईं तरफ डाइव करते वहां पर बचा लिया जगदीप ने। So although Jagdeep lost his cool, but he was very cool while while saving that. It was a lovely save, in fact.
Meanwhile, another attack now from Canara Bank. But this time, the whistle has been blown in favor of FCI. So we are almost at the end of the first quarter. And you may be wondering why the match is still continuing, because the time, the clock that is shown on the screen says it's over, but there were a few timeouts called. And that was an ambitious, hopeful pass by Kerubin Lakra, but there was no white shirt to take that. Maybe hardly a minute left before the hooter will be blown to indicate the end of the first quarter. FCI are against a formidable opponent today. Yesterday it was quite a cakewalk for the Food Corporation of India team against Coal India Limited. They pumped in as many as 34 goals, but it's not the same story today. पहला क्वार्टर अंतिम क्षण पहले क्वार्टर के आक्रमण पर कोल इंडिया पहला गोल कोल इंडिया ने पेनल्टी कॉर्नर से किया था, जिसे कन्वर्ट किया था पृथ्वीराज ने, और एक पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया परीक्षित ने एफसीआई के। एक गोल से एफसीआई की टीम पिछड़ती हुई 34 गोल करने के बाद आप पहले क्वार्टर में अगर गोल नहीं करते हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है। एफसीआई ने कल पहले क्वार्टर में 8 गोल किए थे, दूसरे क्वार्टर में 9 कोल इंडिया के विरुद्ध, और आज पहले क्वार्टर में उनके परीक्षित ने पेनल्टी स्ट्रोक भी मिस किया। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बार फिर सफ़ेद जर्सी में संभालने की कोशिश की थी ज़रूर एफसीआई ने गेम को, लेकिन सही समय पर वहाँ पहुँचकर सुमैया, अनुभवी खिलाड़ी सुमैया, बिपिन, लेकिन प्रधान के पैर में थोड़ा सी कुछ चोट लगी है। सुमैया बैक पास अपने साथी खिलाड़ी को स्कूप द्वारा वहाँ पे लेफ्ट विंग में देने की कोशिश की थी। यतीश को इन्फ्रिंजमेंट था यतीश के विरुद्ध, इस तरह से फ्री हिट यतीश के लिए। कनारा बैंक के यतीश ने अभी भी गेंद संभाले रखी हुई है। यतीश से प्रधान, सुमन्ना, चेतन मलप्पा है वहाँ पर लेफ्ट विंग में। क्या वो गेंद संभाल पाएंगे? नहीं, गणेंद्र जीत आज चमक नहीं रहे गणेंद्र, और एक वहाँ पे कोशिश की थी लेकिन गोलकीपर ने वहाँ पे गिरते हुए वहाँ पे बचाया। गोलकीपर रमनदीप, फॉरवर्ड पास, लेकिन वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी नहीं एफसीआई का। परीक्षित जरूर वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। Yeah, look at that. Once again, very good anticipation there from the keeper. Look at that. Timely dive from Ramandeep. And that saved the day for Canara Bank, at least the moment and maybe the first quarter. Because we are heading towards the end of the first quarter. Anytime the hooter will be blown to indicate the end of the first 15 minutes. As Kerubin Lakra hopefully trying to get someone inside the striking circle. That was not to be, and the corner was averted, but that cannot be taken because the hooter has been blown, indicating the end of the first quarter. So after an entertaining first quarter, the score reads Canara Bank 1, FCI 0. And the only goal was scored by G.N. Prithviraj of Canara Bank from a penalty corner. And then there was a penalty stroke awarded to FCI, but Parikshit missed that, or rather we can say that the goalkeeper of Canara Bank made a lovely save. That was Jagdeep Dayal, who dived towards his right, stretched fully and saved the moment for his team. So FCI are down by a goal. Well, those of you who watched FCI's match yesterday
must be wondering what went wrong with the team in the first quarter of today. But then we have to say Canara Bank are a better opponent, a formidable opponent, so to say. They have attacked well, they have possessed the ball, and they have denied FCI much room inside their D, although they conceded a penalty. But kudos to the goalkeeper for saving that penalty. Jagdeep Dayal stood tall, figuratively, but actually lay down, stretched himself, and saved the penalty stroke taken by Parikshit. Parikshit, in fact, scored 4 goals in the last match. That was yesterday against Coal India Limited. But it's a different ball game today. It's a new day, a new opponent, a new match. And it seems the scoreboard is a bit alien for FCI after they routed Coal India by 34 goals to nil. Today, at the moment, they are trailing by a goal, but there's a lot to play for. And there are 3 quarters left, so anything can happen. The second quarter is about to begin, and here we go. FCI nil, Canara Bank 1. बैंक की टीम 1 गोल से आगे इस पहले क्वार्टर के बाद ये दूसरा क्वार्टर चलता हुआ बाईं विंग में तलाश कर रहे हैं अपना साथी खिलाड़ी महिपाल को गेंद संभाली केरोबिन लकड़ा ने अगर देखा जाए तो कल 2 गोल किए थे, दोनों पेनल्टी कॉर्नर से किए थे, लेकिन आज उन्हें पेनल्टी कॉर्नर से जो मौका मिला था उसका सही लाभ नहीं उठा पाए। बाएं थोड़े से वहाँ पर आक्रमण बनाने की कोशिश करते हुए दीपू सिंह को वहाँ पर फॉल किया गया। पेनल्टी कॉर्नर, दीपू सिंह एक तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, उन्हें जिस तरीके से वहाँ पर रोका गया, अंपायर ने ये पेनल्टी कॉर्नर दिया है। एक पेनल्टी स्ट्रोक मिस कर चुके हैं परीक्षित एफसीआई के सफेद रंग की जर्सी में। गणेंद्र जीत शायद पुश करेंगे, वहाँ हिट लेने के लिए तैयार हैं, परीक्षित भी हैं, पुश करेंगे गणेंद्र जीत। गेंद रोकी गई, ड्रैग करने की कोशिश की थी जितेंद्र गिल ने, इन्फ्रिंजमेंट हुआ। 7 नंबर के जर्सी में पवन को कुछ चोट लगी है वहाँ पर। Yes, he did charge out, but there was a carried, and so that will be another penalty corner. So back-to-back penalty corners for FCI. Remember, there were back-to-back penalty corners awarded to Canara Bank, and from the second penalty corner, Canara Bank scored through Prithvi Raj, and that was the only goal scored in this match so far. And FCI did get an opportunity, a golden opportunity, through a penalty stroke, which could not be converted by Parikshit. At the moment, FCI have another penalty corner, and the Canara Bank players once again not happy perhaps with the decision, having a few words with the umpire, and now they have to face another penalty corner from FCI. Everyone's ready now. The injector pushes. Oh, that was very ordinary. They can't stop the ball. And that will be another penalty corner. Once again, Canara Bank players not happy with the decision. Maybe they were appealing, they are appealing, and they're still having an argument with the field umpire about how the ball was stopped. That was, the ball went up when the first penalty corner was taken, but another penalty corner has been awarded to FCI. So at the moment, all eyes on the Canara Bank goal. Can FCI equalize? No, the players have come out. The defenders have charged before the hit was taken, so it has to be retaken. But no one has been sent out by the umpire, so all the defenders are there intact. All the players on the edge of the circle are there as well. That's another penalty corner. It's stopped well this time. Drag Flick. And that will be
a short corner. FCI still with some pressure applied, but finally the ball has been cleared, and Canara Bank now trying to get the ball out, and finally they win a free hit. Pavan taking the free hit. And in comes the scoop. And that was Chetan Malappa. He will get a free hit for that infringement. So Canara Bank still leading this match by a solitary goal that was scored from a penalty corner in the first quarter itself by G.N. Prudviraj, and that goal separates these two teams. Canara Bank are playing their first match in this tournament. They will be playing Coal India tomorrow, and FCI are playing their last of the group matches. कनारा बैंक का ये पहला गेम इस पूल बी का एफसीआई के विरुद्ध। एक गोल से आगे कनारा बैंक की टीम। पृथ्वीराज ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया था और बराबर करने का मौका मिला था परीक्षित को एफसीआई के, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस समय कनारा बैंक आक्रमण पर लेफ्ट विंग से वहां पर, लेकिन पास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। गेंद छीनने की कोशिश की थी ज़रूर वहां पर यतीश कुमार ने, सफल नहीं हो पाए। इसको द्वारा गेंद आगे बढ़ाने की कोशिश कनारा बैंक के विरुद्ध या आक्रमण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस समय अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए कनारा बैंक के लुकित। अच्छा मूवमेंट अगर देखा जाए कनारा बैंक का, योजना कभी लेफ्ट चैनल से कभी राइट चैनल से। इस समय यहाँ पे शॉट लेने का मौका मिला था, कनारा बैंक का शॉट भी लिया, लेकिन थोड़ा निशाना चूक गया। जबरदस्त कोशिश की थी जिस तरीके से वहां पर लिखतू ने गेंद बढ़ाई थी। इस समय गेंद संभाले हुए चेतन मलप्पा लेफ्ट विंग में बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। सुमैया ने गेंद दी रतन फॉरवर्ड पास वहां पर राइट विंग में। रतन सॉरी कह रहे हैं क्योंकि पास बहुत ज्यादा लंबा हो गया था रतन का। एक बार फिर सफेद जर्सी में एक गोल से पिछड़ती हुई टीम एफसीआई की। स्क्वायर पास दिया अपने लेफ्ट फुल बैक विक्रम मौजूद है यहाँ पे। विक्रम के पास गेंद सेंट्रल लाइन के पास, विक्रम का फॉरवर्ड पास। अच्छा टर्न लेते हुए गेंद बढ़ाना चाह रहे थे विकास लकड़ा। फ्री हिट, बिपिन थे वहां पे मौजूद। परीक्षित से आशिक और पुश किया गया वहां पर डी के अंदर। इस तरह से ये पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिल रहे हैं, लेकिन पुश जहां पे करना चाहिए सही पुश नहीं हो पा रहा है। इस बार देखना होगा कौन पुश करते हैं, कौन हिट लगाते हैं। पुश करने जा रहे हैं परीक्षित। शायद पिछली बार सही तरीके से गेंद नहीं रोकी गई थी, जिसका खमियाजा उठाना पड़ा था। बिपिन ने गेंद रोकने में परेशानी की थी। इस बार ड्रैग करने की कोशिश की थी गजेंद्र जीत ने। Yeah, once again very well saved by the keeper Jagdeep Dayal, stretching fully towards his left. Remember, he has saved a penalty stroke as well at the end of the towards the dying minutes of the first quarter. The shot was taken by Parikshit, and he dived towards his right and denied Parikshit the first goal for FCI. Nitin Vikram Yadav will be taking the free hit for FCI. Inside the 23-meter line, Nitin. He finds Mahipal
the man who scored a couple of goals yesterday. Brinkwan Teal from the right to the ball does not find white shirt. That will be a 16-yard hit for Canara Bank. Canara Bank still having a cushion of 1 goal. The goal that was scored in the first quarter by G.N. Prithviraj, who converted from a penalty stroke. And that goal separates the two teams so far. But remember, that's a slender lead. And in a hockey match, many goals can be scored. And any time, the equalizer can come for FCI. This time, that was ordinary from Mahipal. And he's let the possession go. But meanwhile, this is Kerobin inside his own half. Kerobin initiates an attack from the right. Mahipal is unmarked towards the left. Will he go for Mahipal? He gets inside the D. A check from the stick, and that's obstruction, says the umpire, and that was inside the D. Penalty corner has been awarded, therefore, to FCI. So FCI are getting a lot of penalty corners. Unfortunately for them, they have failed to convert from those penalty corners. This is another one. Can FCI convert? Can FCI equalize? FCI has scored 34 goals yet. FCI has scored 34 goals yesterday against Coal India. It has been a different ball game today. In comes the push, and there's a drag flick. Once again, the keeper comes to the rescue. Now, terrific keeping, terrific defending from Canara Bank. And that's a stick check, and that will be a free hit awarded to Canara Bank. कैरोबिन ने वहाँ पर ड्रैग किया था, लेकिन तारीफ करना होगी कैनरा बैंक के गोलकीपर जगदीप की। जगत पर छा गए जिस तरह से वो रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैरोबिन का जो ड्रैग था, इस बार पुश ठीक किया था वहाँ पर विकास लकड़ा ने। आक्रमण पर एफसीआई गोल तलाश करने की कोशिश, डी के बार से वहाँ पे गेंद संभाली, एक मौका वहाँ पर गोलकीपर एक बार फिर जगदीप, एक बार फिर जगदीप, एक बार फिर जगदीप। ये पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिल रहे हैं नीलाद्री एफसीआई को, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कैरोबियन का अच्छा ड्रैग था इस बार, और एक और ड्रैग फ्लिकर यहाँ पे आ रहे हैं हरमनप्रीत। आपको मालूम होगा फाइनल के दिन यहाँ पे मौजूद रहेंगे हरमनप्रीत, और बेस्ट गोलकीपर अगर देखा जाए तो श्रीजेश भी यहाँ पे रहेंगे। कोल इंडिया का ये जो है। Yes, and Srijesh would have been a happy man to see Jagdeep Dayal perform today. हो He's सकता है कि performing very जगदीप well. को वो टीम में ले लें। Absolutely. श्रीजेश कोच बने हुए हैं इंडिया टीम के। Well, both Harmanpreet and Srijesh will be here in the final match, on the final day, in fact, as guests. Unfortunately, we can't see them on the pitch, but we can see some very promising players, very talented players playing for different teams in this tournament, All India Public Sector Hockey Tournament 2025. नीलाजी श्रीजेश बहुत ही इमोशनल खिलाड़ी हैं। जब उनका लास्ट मैच खेल रहे थे वहाँ पेरिस ओलंपिक्स में, तो गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ गए थे, आपने देखा होगा टीवी पर। जबरदस्त खिलाड़ी हैं श्रीजेश। टोक्यो में भी वो चढ़ गए थे गोल पोस्ट पर। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सबा नायकन बता रहे हैं, कई बार इंटरव्यूज किए हैं। इस मैदान पे खेल चुके हैं श्रीजेश, वेटरन कप हॉकी टूर्नामेंट। Absolutely, and remember, India got back-to-back bronze medals in the Olympic Games. And here comes another push. And
Once again, that was an attempted drag flick. And the corner has been averted. Corner these days are taken from the 23 meters line and not from the corner spot. And there was a time when the corner used to be taken from the corner spot like football. But things have changed and new rules have been implemented to hockey. And there was a time when there was an offside rule as well in hockey, just as we have in football. But that rule doesn't exist today. And now it's also a match with 4 quarters. Previously, it was divided into 2 halves, 35 minutes each. And now it's a 15-minute quarter. 4 quarters, so a 60-minute match. In comes another pass inside the D, another check with a stick. But this time, the free hit goes Canara Bank's way. ये दूसरा क्वार्टर चलता हुआ 1 गोल से पिछड़ती हुई एफसीआई की टीम इस समय आक्रमण पर वहां पर 21 नंबर की जर्सी में वचन मौजूद थे और चेतन लेफ्ट विंग में हमेशा कोशिश कर रहे हैं गेंद संभालते हुए यतीश 25 गज की रेखा के पास रिवर्स में लेने की कोशिश की थी वहां पर सुमैया ने गेंद उनसे छीन ली गई और पलटा आक्रमण विपिन द्वारा दाएं छोर से आक्रमण फॉरवर्ड पास 25 गज की रेखा को क्रॉस करके लेकिन सही इंटरसेप्शन वहां पर अभिषेक का फ्री हिट एफसीआई को 25 गज की रेखा के पास स्क्वायर पास अपने साथी खिलाड़ी नितिन वहां पर सही इंटरसेप्शन सुमैया का फ्री हिट मिलेगी कनारा बैंक को जो 1 गोल से आगे है। पृथ्वीराज ने गोल किया था पेनल्टी कॉर्नर से। अब गोल बराबर करने का मौका मिला था एफसीआई के परीक्षित को। पेनल्टी स्ट्रोक खोया परीक्षित ने। सुमैया से गेंद छीन ली गई। आक्रमण जितेंद्र वहां से शॉट लिया लेकिन पेनल्टी कॉर्नर नहीं। गेंद संभाली रतन। ये यतीश वहां पर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम डी के अंदर शॉट लेने का मौका था लेकिन बाहर मार गए। रतन की अच्छी वहां पर एक कोशिश थी, गेंद बढ़ाई थी रतन ने। Yes, indeed, he did find a net, but the wrong side of it. And that was a stroke, so height was not a factor, but he could not find the back of the net on this occasion. So FCI now are attacking and they're getting a lot of vacant space as well. Good control over there. And this can be dangerous. Once again, the defense comes in rescue. And that will be another corner. Quickly taken there by Bipin. The ball falls to Nitin now. Nitin looking for options. Tries to get through. This is Vikram. Vikram finds Mahipal, the scorer of 2 goals in the last match. But none of the players have found their name in the goal scorers sheet today. Mahipal, that was a hopeful ball inside the striking circle. But no one there to make the most of it. So the ball goes wide, and anytime the hooter will be blown to indicate the end of the second quarter. That means the first half will come to an end. FCI won't be happy with the result so far. They are attacking. They are having the better of the exchanges. There's no doubt about that, particularly in the second quarter. But they can't do what is most needed to score. Ratan loses out to Ankush Tour. FCI once again. That was a charge from Vikram Yadav. The ball goes out. That will be a hit in for Canara Bank.
And that's a long ball inside the D, but the Canara Bank player not able to control, and that will be a hit-in awarded to FCI. And now that was a challenge, but a free hit was awarded, and the ball goes out harmlessly over the end line, and that will be a 16-yard hit for Canara Bank, quickly taken. Once again, a stick check, and that will be a free hit in favor of Canara Bank. Vikram Yadav held for that obstruction. And with that, we come to the end of the second quarter. So the first half, in fact, comes to an end with Canara Bank still leading by that first quarter goal scored by GN Prithviraj from a penalty corner. And the second quarter did belong to FCI, but it created opportunities, got a number of penalty corners, enjoyed more possession in the match, but could not do what is needed most, score goals. So Canara Bank are ahead after the first half by a solitary goal scored by Prithviraj in the first quarter. So with that news, we'll take a break and come back after the break. And on the other side, we hope to have some more entertaining hockey. It's FCI versus Canara Bank. After 2 quarters, the score reads Canara Bank 1, FCI 0.
एक एक का मौका था, पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया था प्रशिक्षित ने। और ये मध्यांतर के बाद का खेल शुरू होता हुआ। हिट इन कनारा बैंक, दाएं से बाएं तरफ आक्रमण, एक और हिट इन के लिए तैयार। कनारा बैंक की टीम इस ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर हॉकी टूर्नामेंट एफसीआई का दूसरा मैच, पहले मैच में एफसीआई ने 34-0 से जीता था, कोल इंडिया को हराया था। फ्री हिट सुरेंद्र कुमार जो कि कप्तान है एफसीआई के और 2 बार के ओलंपियन, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ओलंपिक गेम्स के। ये तीसरा क्वार्टर कोलकाता के सॉल्ट लेक एस्ट्रोटर्फ पर। एफसीआई की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं सुरेंद्र कुमार, इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं एफसीआई की। और एफसीआई की टीम में 3 खिलाड़ी इस जोन के हैं, विकास लकड़ा, केरोबिन लकड़ा और आकाश। और एफसीआई की बात की जाए तो फुटबॉल के लिए बहुत ही मशहूर, यहाँ पे आक्रमण, वहां पर गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, 2 खिलाड़ियों के बीच में फंसे हुए थे एफसीआई के। वहां पर गणेंद्र जीत सफल नहीं हो पाए, पलटा आक्रमण। कनारा बैंक दाएं छोर से आक्रमण बनाने की कोशिश, तो बहुत अच्छा पास, वहां पे गोलकीपर सामने निकल आए। कनारा बैंक के गोलकीपर जगदीप, एक अच्छा बचाव, सही समय पे निकले विक्रम। केरोबिन लकड़ा आपस में समझबूझ के साथ महिपाल, अच्छी ट्रैपिंग, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट हुआ वहां पर परीक्षित का, जिन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया था। फ्री हिट कनारा बैंक के लिए। स्कूप द्वारा गेंद आगे की तरफ, लेकिन वहां पे कोई भी खिलाड़ी नहीं और केरोबिन लकड़ा ने गेंद छोड़ दी। देखा कि गेंद बाहर जा रही है। 25 गज की हिट एफसीआई की, अच्छी ट्रैपिंग। इस बार क्या नितिन कुछ कर पाएंगे? नितिन 25 गज की रेखा क्रॉस करते हुए, नितिन से वहां पे गेंद मिली है जितेंद्र गिल को, लेकिन इसका लाभ नहीं उठा पाए। अच्छा इंटरसेप्शन, वहां पर ऊंची गेंद थी, लेकिन हिट इन मिलेगा क्योंकि गेंद सही समय पर संभाल नहीं पाए थे नितिन। एक गोल से पिछड़ती हुई सफेद रंग की जर्सी में जो टीम है एफसीआई की टीम, पहला मैच जीता था 34 गोल से। केरोबिन लकड़ा ने गेंद बाहर जाने दी। केरोबिन लकड़ा कोलकाता की एफसीआई के लिए खेलते हैं। इस जोन की टीम के 3 खिलाड़ी इस टीम में हैं। और अगर एफसीआई की बात की जाए तो हमें मालूम होगा कि किशानु, विकास, प्रेम दुर्जी, अतानु भट्टाचार्य, मौजूद इस्लाम, आलोक मुखर्जी, फुटबॉल के कई दिग्गज खिलाड़ी इस एफसीआई की टीम में खेल चुके हैं। ऑफिशियल टीम थी, लेकिन ये लोग खेलते थे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल या मोहम्मदन में, नीलाद्री। विकास किशानु की बात की जाए एफसीआई के, Yes, of course, they also played for FCI towards the end of their career in Calcutta Football League, if you remember, in the 90s. And that has been a tackle. No infringement, says the umpire, Jitendra Gill will take the hit in. So FCI need to pull up their socks as they're still trailing by that Prithviraj goal. Meanwhile, they've entered the D and the ball goes harmlessly over the end line. Just about 10 minutes left in the third quarter. FCI have done everything in the second quarter except scoring. And that was a good ball in. And a free hit has been awarded to Canara Bank.
Canara Bank have been impressive both in their defense and in their attacking line as Pradhan Samanna finds Litit. Likit now gets inside the 23-meter line. This is Prithviraj, the man who scored that only goal. Prithviraj, in fact. Ashik for FCI. Ball falls to Deepu Singh. From the right is Jitender Gill. Trying to get inside the striking circle. It has been cleared though. So FCI not really able to get that final touch, a final magical touch. Jitender Gill gets into the 23-meter line. Once again, not able to find anyone inside the striking circle. They get a free hit though, inside the D. There's still a chance. Will he get inside the D? Deepu Singh still holding on, and the whistle has been blown. Free hit awarded to FCI, quickly taken there by Vikram Yadav. That, in fact, was Kerobin with that free hit. They change flanks, get inside the D, but finally free hit awarded to Canara Bank. Canara Bank are busy defending, and they are managing to defend well, managing to keep the FCI strikers away and at bay. So far, they haven't conceded a goal in this match against a team which has scored as many as 34 goals in the last match. So quite an impressive display from Canara Bank. They've also done well in the attacking line. At the moment, they have just fallen a bit in a defensive frame of mind. Maybe that will help FCI a bit as they are now attacking and only attacking. Kerobin Lakra. जी हाँ, इस समय ये तीसरा क्वार्टर स्कूप द्वारा गेंद दाएं तरफ अच्छा वहाँ पर ट्रैप किया था, ऊंची गेंद थी, लेकिन कॉर्नर मिलेगा एफसीआई को. लॉन्ग कॉर्नर वहाँ पे तैयार होते हुए, लॉन्ग कॉर्नर के बाद गेंद बढ़ा दी, आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की थी महिपाल, लेकिन तेज पलटा आक्रमण यतीश कुमार द्वारा. एवर एनर्जेटिक यतीश कुमार. फ्री हिट मिलेगी एफसीआई को, बल्कि वहाँ पर फ्री हिट मिली है कोल इंडिया को. यतीश कुमार को जिस तरह से वहाँ पर रोके, एक बार फिर यतीश कुमार, जहाँ एक्शन वहाँ यतीश कुमार बॉल बढ़ाकर बॉल लेने के लिए आगे चले जाते हैं, रिटर्न पास लेने के लिए यतीश कुमार. पब्लिक सेक्टर हॉकी टूर्नामेंट में पूल बी का ये पहला मैच है कैनारा बैंक का, और एक गोल से आगे. पहले क्वार्टर में गोल किया था पेनल्टी कॉर्नर से पृथ्वीराज ने. इस समय फ्री हिट कोल इंडिया को कोल इंडिया माफ कीजिए, कैनारा बैंक को. एफसीआई के हाफ में हिट इन. जगदीप दयाल की तारीफ करना होगी कैनारा बैंक के गोलकीपर की. अब तक जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, लेकिन यतीश कुमार भी उनके खिलाड़ी किसी से कम नहीं. खतरा मंडलाते रहते हैं हमेशा. केरोबिन लकड़ा को बहुत मेहनत करना पड़ती है यतीश कुमार को रोकने के लिए. 15 अगस्त के हिट एफसीआई के लिए. सेल्फ पास द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश. Well, it's Surinder Kumar now marshalling the defense. Well, he is a player who has international
experience as well. Surinder, the captain of FCI, did not have to feature much yesterday, in fact, because his team was doing so well. But at the moment, FCI are trailing by a goal. So everything that FCI have need to be taken advantage of. That was Surinder Kumar's pass, not very well received by Ashik. The whistle has been blown there, and free hit has been awarded in favor of Canara Bank. FCI players are getting a bit restive at the moment. They know they are trailing, and only about 3 minutes left before the third quarter will also come to an end. 3 मिनट का समय बचा है इस तीसरे क्वार्टर में और सुरिंदर को आना पड़ा है मैदान में. ओलंपियन सुरिंदर कुमार देख रहे हैं उनकी टीम पिछड़ रही है. जब 34 गोल किए थे एफसीआई ने कोल इंडिया के विरुद्ध, तो सुरिंदर कुमार ने थोड़ा आराम किया था, लेकिन आज उनके आराम करने का दिन नहीं. अपनी टीम को लीड कर रहे हैं सुरिंदर कुमार. उनकी टीम एक गोल से पिछड़ती हुई. ये हैं सुरिंदर कुमार ओलंपियन. स्क्वायर पास दिया. ओहो, तेज पास था, जोरदार पास था. सुरिंदर कुमार का ट्रैप नहीं कर पाए सही तरीके से. हिट इन कनारा बैंक के लिए. फॉरवर्ड पास सेंट्रल लाइन के पास. यतीश वहां पे मौजूद हैं, लेकिन गेंद संभाल ली थी पृथ्वीराज ने. बाएं तरफ से आक्रमण. चेतन, चेतन, अभी भी चेतन, चेतन छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन सही समय पे वहां पे गेंद निकाली करोलियन लकड़ा ने. ये है आशिक, सामने की तरफ गेंद बढ़ाई. सुरिंदर पीछे हैं. सुरिंदर गेंद मांग रहे थे, लेकिन गेंद दे दी जितेंद्र गिल. ये है सुरिंदर ओलंपियन. फॉरवर्ड पास, बहुत अच्छा पास सुरिंदर का. डी के अंदर वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं. इंफ्रिंजमेंट कह रहे हैं कि ये पेनल्टी कॉर्नर मिलना चाहिए था. हॉकी बंगाल की प्रशंसा करनी होगी कि सही तरीके से यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं. और खालिद हुसैन वहाँ पर टेक्निकल टीम में मौजूद हैं. आज के दो अंपायर हैं इमरान खान और आदेश वाल्मीकि. देखें, दो अंपायर यहाँ पर आदेश और इमरान आपस में सलाह व मशवरा करते हुए किसे या ग्रीन कार्ड दिखाएंगे. टीम मैनेजर वहां पे विक्रम राणा. Well, a penalty corner has been awarded, in fact, after the consultation between the two umpires. And Canara Bank players are not happy with this decision. So Canara Bank players still not happy with the decision. They are trying to impress upon the umpire. They're trying to explain why they're not happy. But that will not help the cause, because the decision has been taken. They need to defend the penalty corner. They need to concentrate. We have seen some argument in the last match as well between SAIL and Union Bank of India. At the moment, though, the FCI players are ready to take the penalty corner. Can they equalize from this opportunity? In comes the push, and another whistle has been blown. So it's all happening here. And another penalty corner has been awarded. So back-to-back penalty corners, and FCI have another chance to equalize. Remember, FCI has won the first match, and if they can win this match, they will be going straight to the finals. Even if they draw this match, they will have a chance to go to the final. Meanwhile, the push comes in, another shot once again.
Another penalty corner has been awarded. So back-to-back penalty corners. This is the third in a row. If FCI lose this match, then Canara Bank will have a golden opportunity to go to the final, because they will be up against Coal India Limited, and they will start that match as favourites. So if they win both the matches, they will go straight to the final. We already have a very interesting scenario in Group A, and now in Pool B, maybe something like that can happen. Can FCI score from here, though? The third penalty corner in a row. In comes the drag flick. That has been saved. And finally, the goal has been scored. So after repeated penalty corners, a goal has been scored there by the FCI players, and the Canara Bank players are livid with themselves, not satisfied at all by their performance in defending. And that was the first attempt. And then from the rebound, the goal was scored. And the hooter has been blown. So that's the end of the third quarter. And the dying minutes of the third quarter, FCI have equalized. So it's all square here at the Sai Complex in the Salt Lake City in Kolkata. It's Canara Bank 1, FCI 1. So the last quarter of the match is underway. The score reads as Canara Bank 1, FCI 1. In the dying minutes of the third quarter, Parikshit scored that all-important goal to equalize. And remember, Parikshit was the man who missed that penalty stroke in the first quarter. So he has made some amends by scoring from that penalty corner, from the rebound, in fact. And once again, FCI get another chance. And they are appealing for a penalty stroke here. And we have to wait and see what the umpire decides to give. It may be a penalty stroke. Remember, they got one. And look at that once again. And the ball was struck very hard. But a corner has been awarded because it was not carried at all. The ball ricocheted from the stick of the player. FCI continuing to attack. FCI got 3 back-to-back penalty corners, and from the third, they scored 1 goal. So it's all square here. FCI 1, Canara Bank 1. And if the match ends in this way, it will be advantage FCI, because FCI have pumped in 34 goals against Coal India Limited. In that case, Canara Bank need to score more against Coal India. So that will be quite a challenging task for them. Rinku. That is a pass, a long scoop pass there. FCI players still holding on with the ball.
Surinder. But this time, the ball has been taken away by the Canara Bank players. Canara Bank need to soak in the pressure that is applied by FCI. FCI have got the better of the exchanges so far in the better part of the match. But Canara Bank have done pretty well defending, except for the fact that they have conceded too many penalty corners. A scoop towards the Yatish Kumar. Will he get to the goal? No. The ball goes out of play over the end line harmlessly, so no problem whatsoever for the FCI defence. Surinder Kumar, the captain, is marshalling the defence and also the midfield as Rinku loses out. And that was a tackle from Mahipal. Not good, says umpire. Free hit awarded to Canara Bank. Sumaya will be taking the free hit. And that was a pretty ordinary attempt. No red shirt to take that pass. As Rinku until now, he has space in front. Oh, that was an attempt inside the D. That was another pass, just not able to tap in. Over there, the FCI player. So FCI getting a lot of opportunities, not able to convert all. Only scored one goal so far, but that was very important because that was the equalizer. So it's end-to-end stuff here at the Sai complex in Salt Lake City, Kolkata. It's really an entertaining match of hockey. In comes the shot from Parikshit, the man who scored the only goal for FCI and the man who also missed the penalty stroke. So nothing coming off that as well. So it's still 1-1, one FCI and one Canara Bank. तो सर ये अंतिम क्वार्टर अभी भी ओपन है पूरा पूल बी भी ओपन है, पूल ए भी ओपन है। पूल ए में आज 3-3 हुआ था। सेल और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच मुकाबला 3-3। तो सेल के 4 अंक हुए हैं। सेल ने पहले मैच में कोल इंडिया को 17-0 से हराया था, जिसमें दिनेश ने 5 गोल किए थे। और यहाँ ये फ्री हिट, फॉरवर्ड पास, लेकिन अच्छा इंटरसेप्शन पीछे से आया। इस बार आक्रमण पर एफसीआई डी के अंदर, वहां से शॉट लेंगे। 1-1 की बराबरी के बाद कुछ जान जरूर आई है। एफसीआई इन्फ्रिंजमेंट हुआ, उनके पैर में चोट लगी है। फ्री हिट मिलेगा कनारा बैंक को। बाएं तरफ अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक, अच्छा इंटरसेप्शन बीच में किया था। महिपाल के स्टिक से गेंद लगकर बाहर जाती हुई हिट इन, अंदर की तरफ तेजी से बड़े थे केतन। एक बार फिर वहां पर कोशिश की थी लिखित कनारा बैंक के। कनारा बैंक ने पहले क्वार्टर में गोल किया था पृथ्वीराज के द्वारा, और मौका मिला था परीक्षित को पेनल्टी स्ट्रोक से गोल करने का, लेकिन जिसने स्ट्रोक मिस किया उसने पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया। इस समय तेज आक्रमण वहां पे बनाते हुए आशिक रिटर्न लेने की वहां पर जगह बनाया। आशिक ने थोड़ी कशमकश जरूर। जितेंद्र गिल और कनारा बैंक के जो डिफेंडर हैं वहां पर सुमैया। डी के बाहर एक फ्री हिट, फ्री पास द्वारा पीछे की तरफ गेंद। सुरिंदर, फॉरवर्ड पास सुरिंदर का। महिपाल, अच्छा इंटरसेप्शन अभिषेक का। अभिषेक से पृथ्वीराज,
लेकिन हिट इन के लिए बाहर जाता हुआ 1-1 की बराबरी पर अभी भी पूल बी ओपन है क्योंकि मुकाबला 1-1 है। सेल को 4 अंक मिलेंगे अगर ये मुकाबला 1-1 रहता है और सेल को इंतज़ार करना होगा कनारा और सीआईएल के मैच पर। इस समय डी के अंदर वहाँ पर डिफ्लेक्ट किया था, 2 खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, डिफ्लेक्शन ज़रूर आया था लेकिन पोस्ट से बाहर जाता हुआ बिपिन और गणेंद्रजीत वहाँ पे दोनों ही खिलाड़ी मौजूद थे। डिफ्लेक्ट हुआ था शॉट लेकिन बाहर जाता हुआ 16 गज की हिट स्कूप द्वारा चेतन लेफ्ट विंग में अच्छा कोशिश करते हैं चेतन। स्कूप द्वारा क्या स्टिक पे ले पाएंगे लेकिन सफल नहीं हो पाए। पृथ्वीराज जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया था। 16 गज की हिट के बाद फॉरवर्ड पास बिपिन इन्फ्रिंजमेंट हुआ, फ्री हिट मिलेगा। चेस गेम होता हुआ डी के अंदर रिवर्स किक शॉट लगाने की कोशिश जरूर कर रहे थे वहां पर 10 नंबर की जर्सी में मुनीश। पलटा आक्रमण लिखित दाएं विंग से आक्रमण लेकिन इन्फ्रिंजमेंट वहां पर सोमैया मौजूद थे। फॉरवर्ड पास चेतन और लिखित के बीच एक अच्छा आक्रमण डी के अंदर है, वहां पे अकेले वहां पे मौजूद है कि गोल, सोमैया का गोल 2-1 कर दिया कनारा बैंक ने एफसीआई के विरुद्ध। Amazing scenes here. What a good build-up from the right. And that was Chetan Malappa, who shifted from left to right. And what a good pass that was. And Samaya making no mistake whatsoever. So once again, Canara Bank are in lead. What a match we're witnessing here. And about 6 minutes left for FCI to get back to parity in this match. Can they equalize? Can they get at least 1 point? Even 1 point will almost seal the affair for FCI because they have a 38-goal cushion against Coal India. Another shot, and that's another goal. My goodness me. What a way to come back with a solid reply. And within 1 minute, FCI have scored one back. Look at that. That was a pass, and what a good stick work there. And what a good pass, and finally the ball getting in. Yatish Kumar. Now Canara Bank. Can they score another one back? This can be dangerous. The keeper comes out to the rescue of the team. Hit in. Abhishek finds Chetan Malappa. Chetan still holding on. Passes it inside the D, and that could have been dangerous. So it's end-to-end stuff here. Entertaining match of hockey. FCI 2, Canara Bank 2. FCI did have the better of the exchanges, but what an impressive performance from Canara Bank. Manish Rana. And now FCI are back in attack. Inside the D, this can be dangerous. That was well defended there by Bipin Bupaya. FCI once again trying to get back in attack. They have just scored one back to equalize for the second time. And none other than Parikshit scored
that second goal as well. So he has scored a couple after missing from the spot. And now it's a chance for Chetan. One-on-one. Chetan goes past the keeper and he scores. He scores the third goal for his team. Canara Bank are back in the lead. What a match we are witnessing here at the Sai Complex in the Salt Lake City, Kolkata. This is match number 4 of All India Public Sector Hockey Tournament 2025. Chetan has scored another goal for his team. It's 3-2 in favor of Canara Bank. And there is a look at that once again. What a good build-up that was. It was a solo run. He was almost unmarked and did very well to go past the keeper and score that all-important goal. Chetan Malappa has done the assist in the second goal and has scored himself in the first. Canara Bank at the moment have their tails up. Can they score another one and seal the match for them? Once again, Chetan Malappa scoops it forward. The ball goes to Lithik. Oh, that was an obstruction. That was nasty. That may result in a card. Timeout, says the umpire. That was how it happened, as you can see in the replay. So Canara Bank are in the lead. And we have a timeout, so even if the clock on the screen continues to move, well, the time has been stopped by the umpire, and this time a stick check. So that will result in another free hit. In fact, inside the 23-meter line, and that will be another penalty corner. Another penalty corner for Canara Bank. So this can be the defining moment of the match. If Canara Bank can score, they will surely seal the match and almost seal a place in the final, because they will be facing Coal India Limited, but you never know, Coal India can come back as a different team. They did concede 34 goals against FCI, but they may make a comeback in the tournament. Meanwhile, Canara Bank with one, and that was that has been called a dead ball there. Now that was not taken cleanly, so this goal will not count. It's all happening. Some decisions not making the players happy, but at the moment it's 3-2 in favor of Canara Bank. A few minutes left, maybe a couple of minutes left before the final hooter will be blown. Can FCI come back in the match? 3-2 से आगे कनारा बैंक की टीम, और ये अंतिम चक्कर लास्ट क्वार्टर चेतन और लिखित के बीच एक अच्छा तालमेल द्वारा वहां पर गोल किया था। चेतन ने 3-2 किया, और ये एक और मौका वहां पर यतीश कुमार बराबरी खतरा बनकर मंडला रहे हैं एफसीआई पर, और ये फाइनल हूटर इस तरह से कनारा बैंक ने 3-2 से ये मुकाबला जीता। कनारा बैंक के लिए गोल किए पृथ्वीराज, चेतन ने 3-2 किया और सुमैया ने गोल किया। इस तरह से 3-2 से कनारा बैंक ने ये पूल बी का मुकाबला जीता है, और उनका आखिरी मुकाबला कल होगा कोल इंडिया लिमिटेड से। That's the end of our second match on the second day.
What a match, what a precious match, what a wonderful match we just saw. The heated match, the scorching hit in Kolkata and Salt Lake City. So today we are ending this hockey tournament over here. Tomorrow we'll be having the 2 consecutive matches. FCI, UBI versus NALCO, that's Union Bank of India versus NALCO, and Canara Bank will be facing the host team, Coal India Limited. So ladies and gentlemen, that's the end of our second day of All India Public Sector Hockey Tournament 2025 organized by Coal India Limited. We are saying sayonara, see you tomorrow sharp at 9 o'clock, same venue with some different vibes, same All India Public Sector Hockey Tournament 2025.